There is a topic shared with me today: stress management, team management, and time management for success in life. Once upon a time, on a fine Sunday morning, a gentleman was reading the Sunday Times and was deeply engrossed in a study of his choice. And his little 8-year-old boy was constantly harassing, "Dad, you had promised me a cricket bat last week and you didn't. It has been 7 days and you did not buy me a cricket bat." And Dad said, "I'm sorry, tomorrow morning the first job I'll do is get you a cricket bat." He said, "Dad, today is Sunday and I have a match in the afternoon with my friends and everybody comes down with their own bat, so I need to have my own cricket bat." Dad said, "I'm sorry, but tomorrow I'll definitely get it for you." But the little boy was harassing his father. So his father said to himself that I must give this little boy some job that he gets engaged in and would not disturb and harass me. He looked around and saw an A4 size paper on which the world map was printed. So he picked it up and showed it to the little boy. "See, this is the world map." Now the 8-year-old boy studying in standard 3rd had never seen a world map, never studied geography of this level. Then the father said, "I'll tear this into small pieces and give you, and get this whole world map right as you saw it. Get all the pieces together. You can use a sellotape to stick it from behind. And if you get this right, I'll give you a bat right away." Because father knew that would be difficult for an 8-year-old boy to get all these pieces together in the right fashion. So the father was feeling relaxed that fine, he will not be again harassing me for next 2-3 hours and I'll be fine with my Sunday newspaper. Surprisingly, the boy came back in 10 minutes and said, "Dad, job done." The dad was surprised that how could you do this? And he saw the whole world map was very right. "Did you take anybody's help?" The little boy said, "No. No, Dad, I didn't take anybody's help. As you said, I was supposed to do it my way." "How did you do it?" And little boy said laughingly, taking that piece of paper from his dad's hand and said, turning around, "Dad, behind the world map was the picture of a man standing. I adjusted the man and the world got adjusted on the other side naturally." Mind yourself, manage yourself, and your world will get minded and managed. It is as simple theory as that. वो ये नहीं कर रहा है, उसको ये करना चाहिए, वो ठीक नहीं है. This lifestyle, if you decide, you will live complaining lifetime. As they say, man is born crying. He lives complaining and he dies unsatisfied. Make a choice that you don't want to live a life of constant complaining. वो तो ऐसा ही है, उसने वो ठीक नहीं किया, वो तो पूरी जिंदगी चलता रहेगा. क्या आपको इस तरह की जीवन जीना है क्या? What I mean to say is, mind yourself well and manage yourself well, then your world will get minded and managed. Arrange yourself well. When it comes to stress management, remember one thing: stress is an inevitable part of life. It is a package deal. Project comes with stress. Money earning comes with stress. Any relationship starts, there is a seed of stress in it. वो अब कब बाहर आएगा वो पता नहीं है, लेकिन आता है. So work, money or relationship, anything, it has a seed of stress in it. Accept it. Do you agree with me? At some or the other point in life, it sprouts out. So first, it is an inevitable part of life. But to manage it is a compulsory part of your life. You have to manage stress. There can never ever a stress-free life for anybody upon this earth, any living existence upon this earth. There is a proverb in the East African jungles that every morning when the sun rises, the slowest gazelle, that is the deer, has to run minimum faster than the fastest lion to see the evening.
And the slowest lion has to run minimum faster than the slowest deer to see the evening. वरना वो भूखा मर जाएगा. What is the teaching behind this saying? So whether you are the lion or the deer, when the morning rises, you have to run. And every run has stress included in it. So when it comes to stress management, my first point today is, stress is an inevitable part of life. Accept it. Nothing comes to you without stress. Acceptance will create a position for you to judge it well, deal with it well, and find a good end result. Because failure is part of life, setback is part of life, fall is also a part of life. Do you agree with me or not? When Sachin Tendulkar started his international innings, at a very tender age of 16, his first international test match against Pakistan at Karachi, and he was facing the likes of Imran Khan, Wasim Akram, Waqar Yunus, that quality international pace, bowling at 90-95 miles per hour. And their pace and swing beat him n number of times. So he was puzzled as a teenager at the age of 16 going into the international arena. He got out on 15, walked back to the pavilion, and the thought in his mind was, this is my first and last international appearance. I cannot face this pace, this quickies and their swings. This is not my cup of tea. मुंबई में खेल लेंगे, जिंदगी पूरी हो जाएगी. सचिन के मन में ये विचार आ गए थे. When he came back to the dressing room, straight away went into the washing room. He almost cried in front of the mirror. Ravi Shastri, the coach, came to know from his facial expressions and body language that he is experiencing severe stress. When Sachin came out of the washing room, right away on the doorstep, Ravi Shastri was waiting for him and said, "What's the problem?" He said, "I don't want to play international cricket. This is not my cup of tea." Ravi Shastri sat with him and said, "Now remember how to remain stress-free." Ravi Shastri told Sachin Tendulkar that you were playing like a schoolboy. This is an international match. A schoolboy wants to hit a shot every ball. Here you are facing international quickies of the class of Wasim Akram, Waqar Yunus, and this class, Imran Khan. You have to respect their ability. You have to respect their quality. Some balls you have to leave, some balls you have to defend. You are playing like a schoolboy wanting to hit a 4 every ball. How can that happen in international match? First teaching. Second teaching, Ravi Shastri told Sachin Tendulkar that first 30 minutes, you just set your eyes on the field, get the proper judgment of the line and length of the bowlers, get the atmosphere in your mind, and don't look at the scoreboard for the first 30 minutes. Second teaching by Ravi Shastri. These two teachings helped Sachin cool down a bit, and in the second test at Faisalabad, first 30 minutes he stuck around on the pitch, didn't look at the scoreboard, and he hit a wonderful half century, 59, and that started a great career that would go on for 200 tests and 100 international tons. This is the teaching for everybody of us. We start a new factory, packaging industry. We start a new manufacturing unit, and you want to score at every ball. Right or wrong?
Every client that comes up to you, you feel that he is my decorated client and is going to give me big business. Expectation is good. Working on that expectation is good. Treating the client with that attitude is good. But when the end result does not come, remember these words of Ravi Shastri to Sachin Tendulkar, that you can't score a 4 every ball. Forget a 4, not even score any every ball. Right or wrong? That means you can't score with every client. Then you will be able to handle stress. And second, just stick around. Don't look at the scoreboard for the first half an hour. In the same way, when you start a new manufacturing unit, or a new business, or a new venture, or a new part of your business, first aim should be stick around. And that Corona has taught us well how to stick around. Stick around even if the scoreboard doesn't tick in the first half an hour. Maybe for a few months at the start of your business, you may probably not get business. But that does not mean that you lose patience. Otherwise, the moment you lose patience, you invite stress with all your doors open. Two wonderful golden advices that we got from this. And that created the god of cricket. So even of the caliber of Sachin Tendulkar, who was a God-gifted batsman, highly talented batsman, for him Waqar Yunus used to say that I'm confident that Sachin can hit an 85-mile delivery to a leg glance with a walking stick. Forget a cricket bat. With a walking stick, he can hit a leg glance. He was so perfect in that shot. Even for a batsman of that caliber, respecting the circumstances and keeping patience is necessary. This is the first important lesson of managing stress for success. Respecting the circumstances and keeping patience. Success is not overnight. The journey to the top of the Everest starts with one first small step outside your house. Yes or no? You can't land with a chopper on the top of the Everest and have your photograph printed on the first page of any newspaper. You have to go from the base camp. Story to success is from the base camp. It is not an overnight success. Do you agree with me or not? Just raise your hands if you agree. Success is not an overnight story. Never ever. It is always one step at a time. The story of success never goes with the elevator. It is always a staircase. Accept it. These are the golden advices when you want to manage stress. I come from the BAPS Swaminarayan Sanstha, which is one of the largest NGOs of the world. We have got a permanent seat in the United Nations as an NGO. How many of you have been to Akshardham at Delhi or Gandhinagar? Just raise your hands if you've been to Akshardham. Like most of you, I come from that organization. Our Guruji Pramukh Swami Maharaj, whose centenary celebrations we are celebrating, he created this institute to this level. In a span of 45 years from 1971 to 2016, he created 1,300 institutions, hospitals, hostels, schools, colleges, sanskar kendras, community centers, mandirs and akshardhams. That means every 15th day for 45 years, he set up a unit in your language. If somebody in your industry sets up a new manufacturing unit every 15th day for 45 years, fable, fairy tale story. Isn't it? Pramukh Swami Maharaj did it. He initiated 1200 saints like us. More than 750 of them are graduates, postgraduates, chartered accountants, doctors and engineers. Out of them, more than 150 are born American and British citizens. More than 50 of them have graduated from institutes like Stanford, Harvard, Carnegie Mellon. ये तो मैंने आपको इसलिए कहा कि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि कुछ जमा नहीं, कुछ ठीक नहीं चला होगा, इसलिए यहाँ गए.
ज्यादातर लोग संत को देखते हैं तो यही सोचते हैं कि कुछ जमा नहीं होगा, ठीक नहीं चला होगा, कुछ चला नहीं होगा संसार में, इसलिए ये पहन के बैठ गए. BAPS is a different organization. And just recently, about 10 days back, our Guruji Mahant Swami Maharaj initiated 109 youths into sainthood. All of them are graduates, postgraduates, and such professional degree holders. We have saints who had worked with NASA, with Microsoft, with Google, with more than $150,000, $200,000 pay. ये प्रमुख स्वामी महाराज की स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको इसलिए बताई कि प्रमुख स्वामी महाराज ने इतने सारे काम किए, so much of work upon this earth, स्ट्रेस जनरेटिंग, तनाव पैदा करने वाली प्रवृत्ति, आयोजन, व्यवस्था, सभी कुछ अपने जीवन में उन्होंने देखे हैं. Pramukh Swami Maharaj wanted to build a beautiful BAPS Swaminarayan temple in London where we could exhibit the exhibitions of Indian culture to the Western world. We got a land in Harrow, a suburb of London. The neighborhood decided to go in the court against us that these people would till 12 midnight ring the bells and chant the name and disturb our privacy and peace. So the court cases went on and they won and we lost. And when Pramukh Swami Maharaj was informed on phone by our trustees from London that Swamiji, we have lost the case and we will not be able to do this project here. आप अगर कोई जमीन खरीदे, वहाँ आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खड़ा करना हो, एक ऑफिस सेटअप करना हो और वो कुछ केस हो और आप केस हार जाए और वहाँ ना कर पाए तो इट्स अ डिप्रेसिंग मोमेंट, isn't it? Stress moment, isn't it? When Pramukh Swami Maharaj was told that we have lost the case and will not be able to come up with the temple there, first thing Pramukh Swami Maharaj did was, जैसी भगवान की इच्छा. We accept his wish. Second thing he said, we tried our best. We put in the best of resources. But whatever the final result, we accept. Third thing he said, we have decided to do, search for another land, start searching immediately after this phone call, we will do it. This is how you handle stress when it comes. This is how you handle stress for success. First thing, when setbacks, falls and failures, they dawn upon you, first thing to stabilize you, because without stabilizing yourself, you will not be able to come up with the best of ideas to progress. So the first thing is, I accept the wish of God. Second thing, introspection. Did I put in all my resources to bring success? Yes, I did. Then fine, the final outcome, I accept it. And the third thing, determination. We have decided to do it, we will do it. This is how you handle stress for success. And Pramukh Swami Maharaj did it. We came up with a wonderful place in Nisdan, and today that BAPS Swaminarayan Mandir at Nisdan, Reader's Digest writes that it is the 8th wonder of the world. It is among the top 10 iconic buildings of London. And we did it. कहने की बात है कि असफलता आएगी, तनाव आएगा, परिस्थिति बिगड़ेगी. Falls and failures are part of life. लेकिन उसके साथ जो स्ट्रेस आता है वो मैनेज करने के लिए ये 3 विचार जो प्रमुख स्वामी महाराज ने दिए, वो अद्भुत विचार है. आप कोई और थियरी से कभी स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाओगे. अपने विचार को दृढ़ करने से ही आप स्ट्रेस को मैनेज कर पाओगे. नथिंग वर्क्स एक्सेप्ट योर ओन स्ट्रॉन्ग, एथिकल एंड बोल्ड थॉट प्रोसेस. एज सिंपल एज दैट. Dr. APJ Abdul Kalam wanted to become a pilot. In 1957, Dr. APJ Abdul Kalam went to Dehradun to appear for the exams. When the results were declared, he was ranked 9th to pass out the exams. And there were only 8 candidates to be selected. So Dr. APJ Abdul Kalam lost in that race to become a pilot. Naturally, any young boy who sees his own dreams shattering right in front of him would get depressed, a bit dejected. From Dehradun, from that place, Dr. APJ Abdul Kalam went to Rishikesh. He had his Ganga Snan there and went straight away to Shivananda Ashram there.
he met a saint, and the saint asked him that you look a bit depressed and dejected and stressful from your facial expressions, from your body language. What happened? And the young Dr. APJ Abdul Kalam said, this all happened to me. And the saint at the Shivananda ashram there in Rishikesh told Dr. APJ Abdul Kalam, the young boy, that think that God has something more in store for you. Stress came down to level 0. See, thought processes are important. The way you handle yourself. At the start of my talk, I said, mind yourself well and manage yourself well, then you will be able to handle your stress as well. Stress is inevitable. You need to manage it well. And it comes by a thought process. So this saint at Shivananda ashram told Dr. APJ Abdul Kalam that think at this moment that God has something better in store for you. Be positive. Be optimistic. Handle yourself well. Dr. APJ Abdul Kalam, after decades, writes about this incident that I did not get a chance to fly an aeroplane, but I made things which could fly faster than that. That is the missiles, and Dr. APJ Abdul Kalam is now the missile man of India. So when you fail, because success is not golden without failure, success is only silver and without failure. आपके जीवन में अगर आपने चुनौती नहीं देखी है, आपके जीवन में अगर आपने निष्फलताएं नहीं देखी हैं, तो आपकी सिद्धियों में भी इतनी चमक नहीं आती है. Success is become golden only by failures. As simple as that. So ये भी एक बढ़िया विचार है कि when you fail, tell yourself there is something better in place, better in store for me, by nature, by destiny, by God, in whichever form you say it. So this is how such people, I talked to you about Sachin Tendulkar, I talked to you about Pramukh Swami Maharaj, I talked to you about Dr. APJ Abdul Kalam. All these people in their respective fields have passed through all the situations and circumstances that we have passed through and we are passing through and we will pass through. But we learn from the legends that how did they take care of themselves, of their family, of the situation, circumstances, of the surroundings, and handle themselves well. We learn from the legends. Now, how to prepare yourself at this moment, for example, when you are not experiencing any stress, that in times of stress, I need a bank account. You have a monetary bank account to handle any type of financial crisis or financial needs, if not crisis. In the same way, you need a bank account, academic bank account, emotional bank account, spiritual bank account, so that you can withdraw from that account and handle stress when it comes. What is that academic bank account? Your IQ should be high, intelligent quotient, that you think rationally, you act purposefully, and you deal with the situation in a way that is very effective. That is your IQ. Develop your IQ well. That will help you as a weapon against stress. Second is your emotional quotient. Understanding people, understanding yourself well is emotional quotient. More connectivity with people, better you will be resourceful to handle stress. Third thing is spiritual quotient. Now this is very important. I suggest a book to all you professionals and businessmen today. The title of the book is Spiritual Intelligence, Why It Matters More Than IQ and EQ. Spiritual Intelligence, the Ultimate Intelligence, written by Ian Marshall and Dana Zohar. They co-authored this book. They write in this book that a person should develop these 8 qualities that he becomes spiritually healthy, the spiritual quotient. I will not go into the details of this
8 habits or the 8 values and virtues. I'll just name it out for you. If you possess this, you are spiritually healthy. In this book, the authors write, first quality is flexibility. Flexibility to change is intelligence. The new intelligence definition put forward by Harvard University. New definition of intelligence. Flexibility to change, adaptability to change is intelligence. Second is self-awareness. Where am I? What I am talking? Who are the people around me? How am I expressing myself? What are my attitudes at the moment? All this, good consciousness upon all these expressions is your self-awareness, so that you never make a private or a public mistake in your life. That means you are spiritually healthy. Third value of spiritual quotient is an ability to face and use suffering. बहुत अच्छी बात लिखी है. Ability to face the suffering and use the suffering. कोई ऐसी बात आई, दिक्कत आई, तकलीफ आई, दुख आया, तो आप सामना भी कर सकते हो और उस दुख का उपयोग करते हुए आप अपने मिशन को आगे भी बढ़ा सकते हो. The top guy, the top man in our country has this ability to face and use the suffering. Faces the suffering and uses the suffering to convert it into a giant vote bank. Is a very big quality. Fourth quality. See, these are all the resources and weapons that you need handy. 24/7, 365/80. मैं क्या बोला पता चला? 24/7 by 365/80 is 24/7 के शॉप्स तो आपने देखे. By 365 is around the year. By 80 is 80 years of your life. 24/7, 365/80 you need these weapons handy. The fourth quality है an ability to be inspired by vision. आप कुछ देखें और आपको पता, मन में कुछ ऐसा विचार आए, ऐसी सोच आए कि क्या इसका मैं उपयोग अपने मिशन के लिए कर सकता हूं. Inspired by vision. Fifth quality is an ability to cause as little harm as possible to yourself, to your surroundings, to people around you. Sixth quality, an ability to see connection between diverse things. Seventh quality और eighth quality अद्भुत है. Seventh quality है an ability to ask and probe fundamental questions of life. और eighth quality है an ability to work against a convention. So these are the 8 qualities. If you possess, you are spiritually healthy. And if we don't, or we possess it less, we must try to possess it more. So develop your IQ, develop your EQ, and develop your SQ as well, so that you are quite healthy to face times of crisis, times of stresses, and that makes you more healthy. This is work-related part. Sometimes stress comes from people around you, in your relationships. वो काम से भी बड़ा स्ट्रेस होता है, हाँ या ना? काम से बड़ा स्ट्रेस संबंधों का होता है. संबंध कहाँ टूट गए, कोई तकलीफ आई, रिश्तेदारी में आई, डिवोर्स हुए, कुछ हुआ तो स्ट्रेस लाइफ टाइम रहता है. How to handle stress that props up from relationships with people? बहुत अच्छी बात स्टीफन कॉवी ने द 8th हैबिट में लिखी है. Stephen Covey, the author of the 7 Habits of Highly Effective People, he writes the new book, The 8th Habit, subtitled From Effectiveness to Greatness. इस पुस्तक में वे क्या लिखते हैं? The gist of it. When he came here in 2006, he did 4 seminars in India, in 4 metro cities. 23,000 rupees per delegate fee, and the e-ticket opened 24 hours before the event.
And about 700 tickets at Mumbai Oberoi got sold in just 85 seconds because the name was big, Stephen Covey. पूरे दिन का ये सेमिनार था. दूसरे दिन DNA ने रिपोर्ट किया था कि if you have not attended this seminar, read this article. And if you don't have the time to read this article, read this box item. उसमें सारी बातें आ गई. In one line, which Stephen Covey repeatedly said, I'm sharing it with you not just word to word but letter to letter. Stephen Covey said, now listen carefully, how to handle stress when it comes to stress from relationships and people. Stephen Covey said, don't expect others to change. First change yourself. Accommodate yourself to them and they will change then. So don't expect others to change yourself, they will follow. स्ट्रेस कहां आता है? वो व्यक्ति मुझे अनुकूल नहीं है, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि मैं कितना अनुकूल हूं उनको? वो पहले तो आप ट्राई तो करें एक बार. पहले एक बार आप वो तो ट्राई करें कि मैं उनको अनुकूल होने का प्रयत्न करता हूं. That person also wants relations with you. So he will try to accommodate himself as well. बहुत अच्छी बात स्टीफन कॉवी ने लिखी है कि 7 हैबिट्स तो इफेक्टिव है. 7 हैबिट्स क्या है? ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल. और 8th हैबिट के बारे में क्या लिखते हैं? फ्रॉम इफेक्टिवनेस टू ग्रेटनेस. तो रिलेशनशिप की बात ये होती है. हमारे गुरुहरि प्रमुख स्वामी महाराज 1984 में बेल्जियम पधारे थे. वहां डॉक्टर शाह के घर उनका निवास था. डॉक्टर शाह ने उनको पूछा कि स्वामी जी, when we meet people and we know more about people, the positives and negatives, then whenever we meet them, we always see them from that negative aspects. ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसने ये किया था, ये झूठा, ये वो XYZ. चर्चा भी वही करते हैं. देखो हम लोग की चर्चा में ज्यादातर लोग होते हैं, देखना. तो मैं आपको एक बात बताऊं. ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज, एवरेज माइंड्स डिस्कस इवेंट्स एंड चीप माइंड्स दे डिस्कस पीपल. आप अंतर्दृष्टि करके देख लेना कि आप ज्यादातर समय किसका डिस्कशन करते हैं. वो ऐसा है, वो ऐसा था, उसने ये किया. यू आर डिस्कसिंग पीपल. यू आर अ चीप माइंड. स्ट्रेस आएगा. जितना जरूरी है उतना जान लो. डिस्कस आइडियाज एंड डिस्कस इवेंट्स, देन यू विल एंजॉय योर लाइफ. डॉक्टर शाह ने प्रमुख स्वामी महाराज को बताया कि हम तो यही स्पेक्स पहन के सभी को देखते हैं, लेकिन वी हैव सीन दैट यू मीट एन नंबर ऑफ पीपल बिकॉज प्रमुख स्वामी महाराज हैज मेट मोर देन 4 million people, 40 lakh people personally in his lifetime, traveling to 3.5 lakh homes personally, sat with those families and getting deeply involved in their personal, family or social, professional issues, guiding them well. Then how are you able to manage yourself in the way that when you again meet them, I have seen you meeting them with the same comfort, same feelings and expressions, even when you know the negatives of that person. Pramukh Swami Maharaj said a wonderful one thing. Let's see. Now listen carefully. It's a golden advice how to manage stress propping up from relationship issues. Pramukh Swami Maharaj ने कहा that with the people whom you are supposed to live lifetime or for longer years of your life, and for the people with whom you are supposed to work, if those people have 99 negatives and 1 positive, you have to constantly focus your mind on the 1 positive, forgetting and forgiving him or her for the 99 negatives. Only then that person with whom you are destined to live lifetime, destined to work for longer years of your life, you will be able to associate yourself. आप negatives देखते रहेंगे कि तो साथ में कैसे रह पाओगे? And see, this is a package deal. God did not sign an MOU with you that who people come in your life all will be goody with you. Did he sign?
Yes or no? He did not sign. There will be people who will come to help you. There will be people who will come to love you in your life. There will be people who will come to hate you in your life. There will be people who will come in your life to cheat you. सभी को सब कुछ अनुभव है, तो ये तो होने ही वाला है. हाउ टू हैंडल दैट? उसमें से स्ट्रेस पैदा होगा. व्यक्ति को अच्छी तरह से जान ले, फिर जो मर्यादित व्यवहार करना है उस तरह से मर्यादित व्यवहार करे, तो विल बी एबल टू हैंडल आवरसेल्व्स बेटर. So when it comes to relationship, you have to accept that even कोई यंग कपल को टाइटल मिलता है सिटी में मेड फॉर ईच अदर कपल, ऐसी कॉम्पिटिशन्स होती है ना. इवन मेड फॉर ईच अदर कपल में डिवोर्सेस होते हैं. यू नो व्हाई? You know why? Shall I give you the reason? Because even if marriages are made in heaven, they are lived on earth. Even if marriages are made in heaven, they are lived on earth. And when anything is on earth, it has everything. कहने की बात यह है कि सभी प्रकार के लोग होते हैं. You have to make a good choice. And if they are natural in your life, you have to understand them well. Understand the person well. We don't give time to understand the person. अच्छी बातें, अच्छे फेशियल एक्सप्रेशंस, अच्छी स्माइल्स, अच्छे लुक्स, अच्छे कपड़े, अच्छा बिजनेस, और आप उसमें मोहांत हो जाते हो. चलो ठीक है, कुछ कर भी लिया, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज अ पर्सन वेल. तो आप मर्यादित संबंध उनके साथ रख पाएंगे. ये सीख लेना चाहिए. मैं कुछ सही बात कर रहा हूं या गलत? सही. तो ये बात है. आपको जान के ताजुब होगा कि कनाडा में मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेस है. वहां स्ट्रेस के बारे में 1.5 लाख बुक्स हैं. 1.5 लाख बुक्स ऑन स्ट्रेस. कितना तनाव पैदा होता होगा लोगों को कि ये पुस्तकें लिखी हैं. स्पेशल लाइब्रेरी ऑफ स्ट्रेस. और स्ट्रेस के बारे में फाइनली एक बात करना चाहूंगा. भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में जिस तरह से अर्जुन को स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाया और डिस्ट्रेस कर दिया, वो अद्भुत विचार, अद्भुत भावना है. You all might be knowing that just about 1.5 months back, the number 1 B school of the world, the IIM Ahmedabad, has started a course on Srimad Bhagavad Gita and management. You learn everything from the scripture. When Arjun was in stress, that I don't want to fight this battle, I don't want to kill my near and dear ones, and he laid aside his arms, what did Krishna tell him? Did Lord Krishna apply any modern day stress management theory? Let's paint your chariot green. क्या ये कहा? Get your office and everything green. Let's go for a beach walk. वहां तो कुरुक्षेत्र में तो कहा बीच ही था. Let's go for a beach walk. ये कुछ कहा कृष्ण ने? क्या कहा? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन. अद्भुत विचार है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए. क्या? He tells Arjun, and that is to all of us, that your job is to do your karma well, putting all your resources in. Final results, Krishna says, I will decide. कृष्ण ये कहते हैं, फाइनल रिजल्ट आई विल डिसाइड. और आप सभी को ये अनुभव है, लेकिन आप कॉन्शियसली इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते हैं, इसलिए आपको ये महसूस नहीं होता है. मैं आपको प्रश्न पूछूंगा, भाई कहेंगे. All of us have an experience that sometimes we planned well, executed well, put the best of resources and did not get the desired results. Yes or no? Hi Anna. And the reverse also we have all experienced. Sometimes because of some lack of time, kuch hurry thi, worry thi, so we were able to put less time, less planning, less execution into the project, and we got results beyond expectation. Yes or no? दोनों में ये ऐसा, तो इसके बारे में कभी सोचा क्या?
कि यार कभी तो बहुत अच्छा प्लानिंग किया था, एग्जीक्यूशन अच्छा था, तो भी ठीक नहीं जमा, और कभी तो कुछ कम था तो भी बहुत अच्छा परिणाम मिला। तो दैट मीन्स भगवान कृष्ण की ये बात सही है कि यू डू योर वर्क, आई विल डिसाइड द रिजल्ट। दैट व्हेन यू नो दैट ही इज गोइंग टू डिसाइड द रिजल्ट, व्हाई आर यू वरिंग एंड गेटिंग इनटू स्ट्रेस? ये मूर्खता है। कर्म करना हमारा अधिकार है, और जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, एकेडमिक्स, एक्सपीरियंस, टैलेंट, बैकग्राउंड्स, प्लेटफॉर्म, सपोर्ट सिस्टम्स, वो सभी लगा के काम करना, ये मनुष्य का कर्तव्य है, डिग्निटी है। लेकिन फाइनल परिणाम जो आए वो स्वीकार करना, दैट इज ऑल्सो ह्यूमन डिग्निटी। एंड व्हेन यू एक्सेप्ट, यस, I put my best resources, now whatever the result I accept it, then you will never ever experience stress in your life. तो स्ट्रेस आएगा ही नहीं, फिर मैनेज करने की जरूरत ही नहीं है। स्ट्रेस कहां आता है? Why did this not happen? Yes or no? ये एक वाक्य में स्ट्रेस आता है। Every morning, every noon time, every evening you tell yourself, why this didn't happen? और रिवर्स भी स्ट्रेस आता है, माई गॉड व्हाई डिड दिस हैपन विथ मी? यू आर नॉट स्ट्रेट अवे फ्रॉम द हेवन, ओके? एवरीथिंग कैन हैपन टू यू। यू आर नॉट स्ट्रेट अवे फ्रॉम हेवन, एवरीथिंग कैन हैपन टू यू। एंड व्हाई डिड दिस नॉट हैपन? अगेन आई रिपीट दैट गॉड डिड नॉट साइन एन MOU with you, that everything you start, everything that you embark upon will happen goody and 100% successful for you. So life is a bag of mixed chocolates. हम 1996 में अमेरिका एक फैमिली शिविर के लिए गए थे। तो वहां फैमिलीज के साथ बैठते थे और सब शिविर का कार्यक्रम पूरा चल रहा था। उस वक्त अमेरिका में लैंडलाइन में किसी को आप कॉल करें और वो एंगेज हो तो आपको एक बहुत अच्छी एंगेज टोन में एक बात सुनाई देती थी, और वो ये थी कि लाइफ इज अ बैग ऑफ मिक्स्ड चॉकलेट्स। और उस वक्त अमेरिका में 96 में हमने देखा था कि बच्चों के लिए जो बर्थडे गिफ्ट में चॉकलेट बॉक्स होता है, तो उसमें इस प्रकार की डिजाइन होती है कि देयर इज अ लिटिल बॉय, गर्ल, अ लिटिल चाइल्ड कैन जस्ट पुट वन फिंगर इनसाइड द बॉक्स, उतना ही ओपनिंग होता था लिड में, एंड गेट ओनली वन चॉकलेट अ डे। सो इवन इन द एब्सेंस ऑफ हिज और हर पेरेंट्स, दे कैन गेट ओनली वन चॉकलेट। और उसमें उसको पता नहीं होता है कि कौन सी बार आएगी, लंबी वाली, छोटी वाली, काली, सफेद, लाल। सो बहुत अच्छी बात लिखी थी कि लाइफ इज अ बैग ऑफ मिक्स्ड चॉकलेट्स। यू हैव टू पुट योर फिंगर इनसाइड टू गेट वन एवरी डे, बट विच एवर यू गेट, you have to eat and enjoy that I got a chocolate today. Simple. That is how you handle stress. और स्ट्रेस मैनेजमेंट में भगवान का नाम स्मरण भी बहुत काम में आता है। आप ये मत समझना कि हम संत हैं इसलिए बोल रहे हैं। I tell you, more than 50,000 research papers have been produced by men of science who say that some association with God in some way by prayers or chanting the holy name or meditation helps you a lot to keep your physical, mental and emotional health perfect. Dr. Andrew Newberg, Dr. H.G. Coing at the University of Pennsylvania, University of Philadelphia, मैं आपको नाम के साथ बोलता हूँ, आप गूगल पे जा सकते हो। They experimented with 4,000 people with psychoneuro softwares, absolutely a scientific experiment, और उनको नाम स्मरण करवाया और 12 वीक तक करवाया। फिर साइकोन्यूरो सॉफ्टवेयर वर्जन 2.0 से फिर से एक बार माइंड मैपिंग किया, एमआरआईज किए, और क्या कंक्लूजन पेपर में लिखा? By chanting the holy name of God for even 12 minutes a day, you can increase your memory power by 15 to 20%. You can increase your willpower by 15 to 20%, willpower and confidence. Third thing, you can increase your buffer capacity, मतलब दुख सहन करने की शक्ति by 15 to 25%. And lastly लिखा, you can increase your immune capacity, जो कोरोना में हम सबको बहुत जरूरत थी। You can increase the strength of your immune system by 15 to 25% by chanting the holy name of God.
तो भगवान के नाम स्मरण से मेमोरी पावर बढ़ता है, विल पावर बढ़ता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, बफर कैपेसिटी बढ़ती है और इम्यून सिस्टम की ताकत भी बढ़ती है। ये 5 फायदे तो यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया में डॉक्टर एंड्रयू न्यूबर्ग ने बताया। ये मुफ्त में मिलता है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ या ना? जो करते हो उनको धन्यवाद है, नहीं करते कुछ शुरू करना, ये तो मुफ्त में लाभ है। और यूर पीपल आर बिजनेसमैन, एनीथिंग यू गेट फ्री यू ऑलवेज एक्सेप्ट इट। जो भी मिल जाता है वो ले लेते हो, तो ये भी अच्छी एक बात है, आपको देने के लिए हम आए हैं। टीम मैनेजमेंट की बड़ी बात है। यू नो इंडियंस के बारे में क्या लिखा है व्हेन इट कम्स टू टीम मैनेजमेंट? नाउ आई एम शिफ्टिंग फ्रॉम स्ट्रेस मैनेजमेंट टू टीम मैनेजमेंट, जो दूसरा विषय मुझे दिया गया है। 1 इंडियन इक्वल टू 3 जापानीज। एक इंडियन की ताकत क्या है? 3 जापानीज का वर्क आउटपुट दे सके। 2 इंडियंस इक्वल टू 1 जापानीज एंड 3 इंडियंस इक्वल टू 0। ये कहावत है। 2 इंडियन अगर साथ आए तो इतना पुलिंग हो जाएगा, लेग पुलिंग ज्यादा हो जाएगा, तो दे विल फाइनल वर्क आउटपुट विल बी ओनली लाइक 1 जापानीज। एंड इफ 3 इंडियंस कम टूगेदर, नहीं मैं जिस तरह से कहता हूं काम करना चाहिए, नहीं आपका विचार ठीक नहीं है, यू आर इंफीरियर, यू आर जूनियर, एंड इट बिकम 0। टीम की डेफिनेशन क्या है? टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, TEAM। टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। रिपीट विथ मी, टुगेदर everyone achieves more. Again, together everyone achieves more. This is called TEAM, team. Individual talents, as Michael Jordan, the greatest basketball player the planet has ever seen, used to say that individual talent can win matches but only teamwork can win tournaments. जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ, मैं T20 की बात नहीं कर रहा हूं, 50-50 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप की, जहां रोहित शर्मा ने 4 या 5 सदी बनाई थी और इंडिया वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम एंड डेस्टिन्ड टू विन द वर्ल्ड कप। अच्छी तरह से जीत रहे थे और न्यूजीलैंड के सामने सेमीज में हार गए। इंडिविजुअल टैलेंट्स बहुत थी। ऑन द डे ऑफ परफॉर्मेंस, इफ द टीम वर्क डजंट हैपन, इवन द बेस्ट ऑफ टैलेंट्स गो फेल, जो हमने देखा। इंडिविजुअली आप जायंट होंगे, लेकिन बिना अच्छा टीम वर्क, टीम कोलैबोरेशन, यू नेवर विन। कुदरत ने भी हमें यह सिखाया है। आपको पता है टीम वर्क? आप में से सनफ्लावर जिसने देखे वे हाथ ऊंचा करें। इफ यू हैव सीन सनफ्लावर्स, एवरीबडी ऑफ अस, where do they face? Sunflowers towards the sun. लेकिन कोई cloudy day हो, if the day is cloudy and the sun is hidden behind the clouds, where do this sunflower face? कभी किसी ने देखा है ये? वो छोटा लड़का रेड टी शर्ट वाला बैठा है, वो ना बोल रहा है नहीं देखा है, तो मैं आज आपको शब्द से दिखाऊंगा। When it's cloudy and the sun is not shining full, the sunflowers don't face the sun, they start facing each other. बायोलॉजिस्ट ने रिसर्च की और पता चला कि जब सनशाइन था, जो एनर्जीज प्राप्त की थी, वही एनर्जीज जब नहीं मिल रही है सन से, they start sharing with each other, and the one with more energy shares that energy with the one sunflower which is lesser and keeps it alive. This is called teamwork. तो ये कुदरत में, नेचर में टीम वर्क है। हमारी संस्था BAPS का जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, यहाँ कोलकाता में भी हमारा बहुत बड़ा अक्षरधाम तुल्य कैंपस है। आप जोका में जाइए, डायमंड हार्बर रोड पे आप जब गंगा सागर जाते हो, वहाँ हमारा बहुत बड़ा मंदिर है। और ये हमारे पूज्य अक्षरानंद स्वामी हैं, अक्षरनंदन स्वामी, वे वहाँ के मुख्य संत हैं। ही इज अ पोस्ट ग्रेजुएट एंड ही हैज लेफ्ट असाइड अ बिग सैलरी
and become a saint. बहुत अच्छा कैंपस है, कभी आप विजिट करना। तो हमारा रहस्य टीम वर्क है। जिनको जो आज्ञा हुई, जिनको जो रोल करना है, वो ठीक तरह से उसको करना चाहिए। That is the teamwork. And only then you exist and the team exists. And the biggest problem that disrupts teamwork and team association is capital I, जिसको और शब्दों में हम बोलते हैं ईगो। आई एम मोर क्वालिफाइड देन एनी मेंबर ऑफ माई टीम, सो एवरीबडी मस्ट ईयर टू मी। आई हैव मोर एक्सपीरियंस देन एनीबडी इन माई टीम, सो एवरीबडी मस्ट एक्सेप्ट माई आइडियाज। ये ईगो रहता है ना। पढ़ाई ज्यादा है, एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि द टॉप 100 आइडियाज दैट हैव चेंज्ड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, उसमें से 70+ आइडियाज क्लास 3 और क्लास 4 पीपल में से आए हैं। आईसीसी में इंग्लैंड में बड़ी चर्चा हुई कि फुटबॉल में जितने पैसे उतने क्रिकेट में क्यों नहीं है भाई। तो बहुत चर्चा की, ये करे वो करे, एडवर्टाइजमेंट ये वो। क्लास 3 क्लास 4 कैटेगरी का एक क्लर्क बाहर बैठा था। आफ्टर द मीटिंग ही टोल्ड दैट सर कैन आई प्रेजेंट माई थॉट टू यू। अरे आपके पास क्या आइडिया हो सकता है, हम लोग ने इतनी 3 घंटे तक चर्चा की। एवरीथिंग एनीथिंग अदर देन दिस टू से? ही सेड यस। वो क्लर्क ने कहा कि सर फुटबॉल में जितने पैसे इतना क्रिकेट में लाने हैं? तो क्या हाँ। फुटबॉल में जैसे स्टेडियम भर जाते हैं, इतने स्टेडियम भरने हैं क्रिकेट में? तो क्या बोले हाँ। सर देन स्टार्ट अ 20 ओवर गेम, 20-20 मैच खेलना शुरू कर दो, स्टेडियम भर जाएगा, पैसा आ जाएगा। The top guys in ICC said, "Are you a fool? ये 50 ओवर की तो की है टेस्ट मैच में से।" तो इसने क्या कहा, फुटबॉल जितने पैसे चाहिए 20-20 कर दो, और 20-20 कर दी तो आए ना फुटबॉल जैसे जितने पैसे, और जो टीम्स बिकती हम फिगर्स देखते हैं। So don't wear that ego jacket that because I am academically more qualified than any member in my team, I have more experience than any member of my team, so only my ideas, my experience can work better than the rest of them. Forget it. ये ईगो थोड़ा डिफ्लेट कर देना, और आप देखेंगे कि every 4th person sitting besides you is in some way more intelligent and talented than you. Do you agree with me or not? In some way, if not in all ways, in some way he is, she is. तो आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा, तो टीम वर्क आगे चलेगा। और आखिर में बात है टाइम मैनेजमेंट फॉर सक्सेस। ये 3 बात मुझे बताई गई थी, स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर सक्सेस, टीम मैनेजमेंट फॉर सक्सेस, एंड थर्ड वन इज द टाइम मैनेजमेंट फॉर सक्सेस। तीसरी और आखिरी बात कि टाइम मैनेजमेंट फॉर सक्सेस, रिस्पेक्ट टाइम एंड टाइम विल रिस्पेक्ट यू। एक बहुत अच्छी किताब मैं आप सबको सजेस्ट करना चाहूंगा, जो कोरोना के वक्त मैंने पढ़ी। द टाइटल ऑफ द बुक इज 15 सीक्रेट्स दैट सक्सेसफुल पीपल नो अबाउट टाइम मैनेजमेंट। 15 सीक्रेट्स दैट सक्सेसफुल पीपल नो अबाउट टाइम मैनेजमेंट। केविन क्रूज ने यह पुस्तक लिखा है। इस पुस्तक में उन्होंने द प्रोडक्टिविटी हैबिट्स, बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया है, द प्रोडक्टिविटी हैबिट्स डिस्क्राइब किए हैं। किसकी? ऑफ 7 सेल्फ मेड बिलियनर्स फ्रॉम ऑर्डिनरी मैन, ऑफ 13 ओलंपियंस, ऑफ 239 एंटरप्रेन्योर्स एंड अबाउट 29 स्ट्रेट ए स्टूडेंट्स। मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से हार्वर्ड में ग्रेजुएट हुए, वहां तक वे हमेशा ए रहे। तो स्टूडेंट्स, ओलंपियंस, दैट इज स्पोर्ट्स पीपल, एंटरप्रेन्योर्स एंड बिलियनर्स, सभी की प्रोडक्टिविटी हैबिट्स डिस्क्राइब की है। बहुत अच्छा पुस्तक है। Chetan, I would request that you can get multiple copies of it and distribute it in this conference as well. It's a wonderful book. कुछ करना चाहेंगे कमिटी वाले? हाँ, थैंक यू। चलो एक होमवर्क दे दिया, स्ट्रेस भी दे दिया साथ में। It's a wonderful book, 15
हैबिट्स दैट सक्सेसफुल पीपल नो अबाउट टाइम मैनेजमेंट। केविन क्रूज ने ये पुस्तक लिखा है, उसमें बहुत अच्छी ये बात लिखी, हाउ कैन यू मैनेज योर टाइम। मोर टाइम इज वेस्टेड इन मिनट्स देन इन आवर्स एंड मोर टाइम इज वेस्टेड इन सेकेंड्स देन इन मिनट्स। प्रमुख स्वामी महाराज जिनकी मैं बात करूं, उनकी क्या टाइम मैनेजमेंट था। एट द एज ऑफ 70 once in Mumbai he had a dentist appointment. He started from Dada temple. It was like about half an hour way to the dentist. He started reading his letters, sitting in his car. He was reading his letters. कुछ और नहीं देखा, डेंटिस्ट के वहां पहुंचे, वहां वेटिंग में बैठे थे. He was reading his letters and answering those letters to his secretary. डेंटल चेयर पे बैठे वहां तक उनके हाथ में लेटर था और डेंटिस्ट ने कुछ प्रोग्राम किया, मतलब 1-2 एक्सरे निकाले. उसके बाद ब्रेक बीच में आया, लेटर मांग लिया, पढ़ना चालू कर दिया. बैक फ्रॉम द डेंटिस्ट प्लेस टू द अदर स्वामीनारायण टेम्पल, अनदर 30 minutes he read letters. He read more than about 40 letters and answered 40 letters in his trip to the dentist and coming back. This is time management. लेकिन आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट कहां बिगड़ जाता है? आप ये सब बातें जानते हो, मैंने कोई नई बात नहीं की है. विनीत कुमार, एम आई राइट? हम सब कुछ ये जानते हैं. कपूर जी, बात ठीक है ना? हम लोग सब ये जानते हैं और थोड़ी प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन वेयर डू वी लूज? डिजिटल टाइम. दिस गैजेट्स आर मेड टू सर्व यू. द रिवर्स हैज हैपेंड. वी हैव बिकम द स्लेव्स ऑफ इट. पता इनसे डिजीज होते हैं. टेक्स्टाफ्रेनिया एक डिजीज है, डिजिटल डिजीज. टेक्स्टाफ्रेनिया मतलब आपको ये लगता है कि नहीं मेरी घंटी शायद बजी, हाँ मेरे जेब में मेरा फोन है ना, आई थिंक इट इज वाइब्रेटेड, समबडी हैज मैसेज मी, एंड यू पुल आउट द फोन एंड सी कोई मैसेज नहीं, रख देते हो वापस. दिस इज कॉल्ड टेक्स्टाफ्रेनिया. फिर एक रोग आता है एंजाइटी. टीनेजर्स एंड यंगस्टर्स, दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज एंड दे आर बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड. एंजाइटी, टेक्स्ट प्लस एंजाइटी, वो क्या है? My God, since half an hour nobody has texted me. Why? ये मरने जैसी बात हो जाती है इनके लिए. फिर आता है FAD, FAD. FAD has been officially declared by the World Health Organization as a mental disorder. FAD क्या है? Facebook addiction disorder. और जस्ट 1 महीने पहले आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि एक बड़ी MNC की एग्जीक्यूटिव ने एक एम्प्लॉय रखा है उनके बाजू में. ही इज पेइंग दैट एम्प्लॉय फॉर व्हाट? दैट इफ आई ओपन फेसबुक ड्यूरिंग माय ऑफिस आवर्स यू हैव टू स्लैप मी. ये एग्जीक्यूटिव ने एक एम्प्लॉय रखा है एंड द एम्प्लॉय सिट्स बिसाइड्स हिम. द मोमेंट ही स्टार्ट्स हिज और ओपन्स हिज फेसबुक, ही स्लैप्स हिम. ही इज पेड टू स्लैप हिम. फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर. इससे बना होता है फोमो. टीनेजर्स सभी को ये लागू होता है. फियर ऑफ मिसिंग आउट, FOMO. आपके फ्रेंड्स ने फेसबुक पे पोस्ट की, सी वी मेट एंड वी हैड अ गुड ड्रिंक एंड वी एंजॉयड. ओ माय गॉड, आई मिस्ड आउट. व्हाई डिडंट दे कॉल मी? दे शुड हैव टेक्स्टेड मी. आई वुड हैव रन टू दैट प्लेस. और रात को 2 बजे तक नींद नहीं आती है. उसके सामने सुग्न लोगों ने जोमो चलाया है, JOMO, जॉय ऑफ मिसिंग आउट. आपने नहीं बुलाया ना? मैंने भी घर पे पापा और मम्मी के साथ बैठ के चाय पी, अच्छा नाश्ता किया और अच्छा टीवी शो देखा. The digital diseases, average Indian spends 2 hours and 40 minutes in front of the screen. Reduce your screen time to increase your time efficiency. इतनी जरूरत नहीं है. What is sugar to a diabetic patient is loads of information to human mind. जानने की जरूरत ही नहीं है. ट्रंप फ्लोरिडा में रहता है, मायामी में रहता है, वहां पे उसके वहां तो वो क्या करता है, वो यहाँ कोलकाता में जानने को आपको क्या जरूरत है? इतना ही जानना है, वो हार गया और जो बाइडेन अभी प्रेसिडेंट है, दैट्स इनफ. आपको ज्यादा चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है. What is sugar to a diabetic patient is loads of information to human mind. Manage your time well. Cut down on things that take away your time. And the biggest cut down is on your digital devices. इसलिए स्टीव जॉब्स ने, जिन्होंने आईफोन बनाया, उनके बच्चे 18 साल के हो गए, वहां तक उनके बच्चों के हाथ में आईफोन नहीं दिया था. This has been written in the autobiography Steve Jobs title by his best friend Nick Bilton. पूछा
Steve Jobs को Nick Bilton ने, why haven't you given these iPhones and iPads in your children's hand? He said that unless they attain maturity age, we are not going to give them. Me and my wife, they have sat with my children, we have sat with our children, made them understand. My daughter is 13, my son is 11, made them understand, see, this is good for you, your friends have it, if you want it, we'll give you. But this has the power to disturb your life, this has the power to ruin your career. सुग्न लोग ये समझते हैं, हमको भी समझना चाहिए. तो इसलिए इससे हम टाइम मैनेज कर सकते हैं, डेलीगेशन ऑफ वर्क से कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग से कर सकते हैं, वेल प्लानिंग से कर सकते हैं. इसके बारे में मैं डीप में नहीं जाता हूं क्योंकि आप सब करते हो, अच्छी तरह से करते हो, इसलिए तो यहां तक पहुंचे हो. तो ये 3 बातें थी कंक्लूजन में. स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर सक्सेस इन लाइफ, टीम मैनेजमेंट फॉर सक्सेस इन लाइफ एंड टाइम मैनेजमेंट फॉर सक्सेस इन लाइफ. आपको शायद ये प्रवचन में कुछ याद न रहे तो अंतिम ये बात याद रखना, 8 + 8 + 8. एक बार मेरे साथ बोले, 8 + 8 + 8. अब वो क्या है? 24 आवर्स हैं आपके पास. यू हैव 24 आवर्स इन अ डे. डिस्ट्रीब्यूट इट वेल इनटू द 8 + 8 + 8 सिस्टम. फर्स्ट 8 इज Sunil. First 8 is honest, ethical, hard work in your profession. Second 8 hours is good sleep and rest. Third 8 hours are very important. If you can manage it well, you will manage stress, you will manage time, and you will manage your teamwork well. Third 8 hours are very important. This is the formula that I have designed and devised out of all my readings, travels and experiences. Third 8 hours we teach 3F, 3H and 3S. 3F is family, friends and faith. 3H is health, hygiene, hobby. 3S is soul, service, smile. Into these 9 departments, your third 8 hours of the day should go. Then it is a well-lived, balanced, stress-free life. Thank you very much for patiently listening to me, and all my prayers for all of you.